Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Kiran Hashmi once again from the platform of the Skillers Education. I'm continuing with my request-based sessions, and today's session is a very interesting one, which actually I combined multiple ideas together. There were some of my colleagues, friends, students, and my followers who posted different ideas that they wanted me to talk about ethics within school, morality, integrity. So I thought that why to have separate sessions for them. So I combined all of them together. And then I've come up with today's session, which is basically a session on integrity, ethics, morality, and practices of school professionals. So again, as I've been telling you for the past few weeks, as I've been doing these kind of small sessions, that it will be a very, very crisp, focused, concise session. And I'm only going to talk about these elements and what are the things, what are the elements, how are they happening, and how can we improve upon it. Because my sessions are basically more based on how to improve the current practices. So let's start. Please, you are all welcome to share your comments with me. Please, everybody, if you're not participating in the live session in the synchronous, please feel absolutely free to write asynchronous mode. Write it down on the chat box and I'll definitely be responding to you later. आपको जब वक्त मिलता है, जिस टाइम पे भी आप अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज शेयर करना चाहे, आप मेरी वीडियोस के ऊपर उसके नीचे आप कमेंट में डालिए और मैं ज़रूर उनको रिस्पॉन्ड करूँगी. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे बात करूं, प्लीज फील फ्री टू शेयर, क्योंकि दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर मी व्हेन यू पीपल शेयर योर आइडियाज कि एंड यू रिक्वेस्ट कि किरण इस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है. तो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू दिस. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एवरीवन विद द टॉपिक दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल टुडे. I hope my screen is visible to everyone. Right. So, as I did tell you in the beginning, the topic for today's discussion is integrity, ethics, morality, and practices of school professionals. ये चार अलग अलग चीजें हैं. इंटेग्रिटी एक अलग चीज होती है, एथिक्स, मोरालिटी, प्रैक्टिसेस, ये क्या चीजें हैं. हम पहले इन्हें समझेंगे, हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से हम सबके ऊपर अप्लाई होता है, हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे अप्लाई होता है और हम इसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. तो मेरा पहला सवाल जो सबसे है कि वैल्यूज क्या होती है. इज इट रियली इजी टू टॉक अबाउट वैल्यूज? इज इट समथिंग दैट वी कैन इजीली मेजर? इज इट समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली क्वांटिफाई? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द करंट वर्ल्ड, यू वुड सेल्डम सी, यू विल सेल्डम फाइंड पीपल हु आर वैल्यू ओरिएंटेड. हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर, हम बहुत एम्फसाइज करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर, लेकिन क्या वैल्यूज़ कोई ऐसी चीज़ हैं कि जिन्हें हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं? I came across this very interesting idea that I have actually shared here in the slide for you all. It is very difficult to explain ethics. It is very difficult to explain values. It is very, very difficult to explain morality. And obviously the principles of practice in a limited space. बहुत मुश्किल है इस बात को लफ्ज़ों में बयान करना कि एथिक्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इंटेग्रिटी क्या है और मोरालिटी क्या है. जब हम बयान नहीं कर सकते तो हम उन्हें अपनी प्रैक्टिसेस में किस तरह शामिल करेंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेनली टॉक टू यू ऑल अबाउट. एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म जो आज मुझे मिली वो ये थी कि डीलिंग विद वैल्यूज इज लाइक ट्राइंग टू होल्ड अ स्लिपरी फिश. एक चिकनी मछली को हम अपने हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं? यही बात है कि जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारी इंटेग्रिटी है, जो हमारे एथिक्स हैं, मोरालिटी है, उन्हें हम अपने हाथ में कैसे पकड़ेंगे? ये आसान नहीं है. ना इनको समझना आसान है, इनकी प्रैक्टिस तो एक अलग जोन में चली जाती है, और ना इनको करना इतना आसान है जितना कि हम इसे समझ रहे होते हैं कि दिस इज ईजी. वैल्यूज क्यों मैटर करती हैं? क्यों हमारी जिंदगी में वैल्यूज की इतनी अहमियत है? बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यूज हमें दे रही होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यूज हमें सिखा रही होती हैं. सबसे पहली चीज जो वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी या इंटेग्रिटी हमें देती है वो है हमारी अपनी जात की समझ. वी रियली बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ अवेयरनेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द
कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी अपनी शख्सियत क्या है, हमारे घरों के तौर तरीके क्या हैं, हमारे स्कूल्स के तौर तरीके क्या हैं, हमारी सोसाइटी के तौर तरीके क्या हैं, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्चुअली एडजस्ट इनटू द कंपार्टमेंट, इनटू दैट जोन where we are completely, it's an unknown zone for us. So unless we do not understand the real worth of values, we cannot adjust ourselves into the environment that we are trying to. So becoming self-aware is one of the most important advantages that values, integrity, morality, and ethics brings to our life. It actually helps us make ethical decisions. अभी मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटी सी एग्जांपल कि ethical decisions क्या होते हैं. अब मिसाल के तौर पे हमारे बहुत सारे जगहों पे मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से अपने पर्सनल सीक्रेट्स शेयर करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो किसी को बताना नहीं. दिस इज अ वेरी कॉमन practice. Everybody, all of us do that, and we try to find somebody whom we trust. Now, if a person is really opening his heart or her heart and sharing what he or she is going through, what is our role then? Is our role to just listen, help, and completely forget what the person has said, or to communicate it to others? ये एक एथिकल डिसीजन होता है. जब हमसे हमारे घरों में, हमारे बहुत कॉमनली हमारी सोसाइटीज में आप देखें, व्हेन पीपल सिट टुगेदर दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स सीक्रेट्स. दिस इज नॉट एन एथिकल डिसीजन. This is an unethical decision, because if somebody has actually shared his or her concern, his or her worry, or his or her secret, it means that that needs to be confined, stayed. It has to restrain with you, and that would only come when you make ethical decisions. It develops credibility. अगर मैं एक वैल्यू ओरिएंटेड इंसान हूँ, मेरे अंदर मोरालिटी है, मेरे अंदर इंटेग्रिटी है और एथिक्स है, तो दुनिया मुझे एक क्रेडिबल इंसान के तौर पे एक्सेप्ट करेगी. क्रेडिबिलिटी का मतलब भी यही है कि वो मुझसे बात करेंगे, वो मुझसे शेयर करेंगे, वो मुझे अपने कंसर्न्स बताएंगे, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत एथिकली उनके इश्यूज को और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँ. राइट. अंडरस्टैंडिंग वन ओन्स कोर वैल्यूज बहुत जरूरी. जो अभी ऊपर वाली बात है, ये उसी का एक एक्सटेंशन है कि व्हेन वी बिकम सेल्फ अवेयर, it's not only that we are doing good to ourselves, we are actually doing good to many others who are around us, many others. So this is something very important, that why values, ethics, morality, and integrity is of such importance, which unfortunately we as individuals, as professionals, as teachers, we have forgotten it in our own educational institutions as well as within our society. Now, when we talk about professional ethics, when we talk about morality within the professional standards, when we talk about integrity क्या होती है? Integrity होती है consistency of doing something. ठीक है. Morality, moral values होते हैं, ethical values होते हैं, ये हमारी morality और ethical boundaries होती है. जब हम एक प्रोफेशनल सेटअप में काम कर रहे थे, देखिए चाहे वो हमारा स्कूल हो क्योंकि हम टीचर्स हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या वो हमारी फैमिलीज हो, या बी इट एनी प्लेस वेयर आर वर्किंग, there are certain professional boundaries. It is very important for us as professionals to understand those boundaries, and it is very, very important, in fact imperative for all of us to maintain that professional behavior that actually requires morality, ethics and integrity. Very, very important. मैं इसी के बारे में आगे आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगी कि हमारी जात के दो हिस्से होते हैं. One is known as our personal self, the other is known as our professional self. When we are in a professional boundary, जब हम एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्या प्रोफेशनल सेल्फ की ज़रूरत होती है या पर्सनल सेल्फ की ज़रूरत है? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई एम एक्चुअली putting in front of all of you to think and start understanding that which self is more important when you are working in a professional boundary, your personal self or your professional self. If you think that your personal self is of immense importance and it is higher than your professional, then what are those codes of ethic that you need to keep into your mind while you're using your personal self within a professional boundary? Or if you say that your professional self is more important when you are in a professional boundary, then what are those codes of conduct? What are those codes of ethics that we are supposed to be following? ये कुछ questions हैं जो मैं आप लोगों के लिए
छोड़ रही हूँ, think about it. Whenever you people will listen to this conversation that I'm having with you all today, please think about it and write, do write कि personal self या professional. कहीं कहीं हमें दोनों ही बहुत important होते हैं, लेकिन if we are using both the personal and professional self, are we really following all the codes of ethics? Yes or no? This is something that we really need to think about. Moving from here, now let me quickly take you that what actually are the standards, the required standards for professionals when they work in a प्रोफेशनल बाउंड्री. जब मैं प्रोफेशनल बाउंड्री की बात करी तो मेरा मतलब आपका प्रोफेशनल वर्क प्लेस है. वो वर्क प्लेस सिर्फ फिजिकल वर्क प्लेस नहीं है. प्लीज रिमेंबर, when we talk about any place where we work, it has three domains: the physical domain, that means physically the structure of it, the social domain, and the psychological domain. राइट. तो जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात, जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, और उन सब से रिलेट करके हम अपनी ज़ाती प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं. तो ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं जो 2010 में गिलबर्ट ने दिए. ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, और अगर आप किताबें पढ़ें तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिकली रिलेट कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ. ठीक है. What are the common standards telling us? The common standards tells us that we as professionals within a professional boundary are supposed to be working on certain principles. Now those principles are based on value essentials. एक स्कूल के अंदर, एक तालीमी इदारे के अंदर, क्योंकि मेरा फोकस तालीमी इदारे है इसलिए मैं उनको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट हम जिस इदारे में भी काम करते हैं, जिस तरह के फील्ड में भी, हमारे इदारों के कुछ उसूल होते हैं. जिन उसूलों पर हमें अमल पैरा होना होता है वो हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का पार्ट है. लेकिन जब हम उन प्रिंसिपल्स पे अमल दरामद करते हैं, या when we work on the principles, when we bring them into practice, there's a very strong element that we need to actually remember all the time and religiously focus on, that is the values essential. वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हमें उसके अंदर डालनी है जिसे हम एक्सप्लॉइट ना करें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. राइट. फिर उसी से आगे बढ़ते हुए उन्हीं वैल्यूज एजुकेशन को, उन्हीं वैल्यूज मोरालिटी और एथिकल कंसिडरेशंस को आगे लेते हुए हम किस तरह अपने तालीमी इदारों में इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं. देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी दो अलग अलग चीजें होती है जिसे आमतौर पे लोग मिक्स कर देते हैं. डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, ये सारे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एक स्कूल के अंदर, एक तालीमी इदारे अंदर होते हैं. लेकिन हम उन्हें कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कितनी वैल्यू ओरिएंटेशन के साथ करते हैं, कितनी इंटेग्रिटी के साथ करते हैं, दैट इज ऑल विच कम्स टू अस. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं. अगर हम वाकई प्रिंसिपल्स को समझते हैं और वैल्यू ड्रिवन है, इंटेग्रिटी हमारे अंदर है, मोरालिटी है, तो हम बहुत आसानी से फर्क कर सकते हैं बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस. हम अपने इदारों में तासुब को नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपने इदारों में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड हम नहीं कर रहे. और अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अस, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द एथिकल values. This is against the morality that we have taken, and this is also against the integrity that I have as a personal and professional self. Right? फिर हम किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं? हम इंक्लूसिविटी को, हम सबको साथ लेकर चलते हैं. हर इंसान की इज्जत, चाहे वो कोई भी हो, रिस्पेक्ट, acceptance and appreciation. These are the three fundamental principles on which any institution supports and work. And if you really want to see your institution excel, ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें गिलबर्ट की तरफ से दिए गए हैं. ये एथिकल कंसिडरेशंस के लिए हैं, मोरालिटी कंसिडरेशंस के लिए, सोशल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए हैं, और अपनी प्रैक्टिसेस में, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इंटेग्रिटी को लाने के लिए दिए गए हैं. Moving from here, this is a very interesting table chart that I found, and I thought it is very important that I share them with you. Principles and values. क्या फ़र्क है हमारे उसूलों में और हमारी इक़दार में? वैल्यूज़ हमारी इक़दार है.
सलाम करना हमारी वैल्यू है, बड़ों के साथ बदतमीजी ना करना हमारी वैल्यू है, अगर कोई बड़ा हमारे सामने आ जाए अपनी सीट से खड़े हो जाना हमारी वैल्यू है, किसी की तकलीफ में देख के उसको सपोर्ट करना हमारी वैल्यूज हैं। तो ये बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन जब इसी वैल्यूज को, जो हमारे घरों की इख्तियार है, जब हम उन्हें अपने तालीमी इदारों में लेकर जाते हैं और उन्हें हम बहुत मजे से मर्ज करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैरिज between the school principles, rules, and the values that we have. So we have some of the values that are coming from our personal self, and there are certain values that are actually coming from a professional self. So the marriage between them is something which is very interesting, and the way those are absorbed by us as professionals actually becomes our practices. और integrity, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, it's a repetition, it's a consistency of doing something. तो अगर आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के साथ इस मर्जर को प्रैक्टिस करते हैं तो यू एक्चुअली बिकम अ वेरी एथिकल प्रोफेशनल, विच इज बेसिकली द नीड ऑफ टाइम। तो हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज का मर्जर यहाँ पे आपके सामने शेयर करें, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेड, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड्स। The very first among everything is respect to everyone, impartiality, no prejudice of any kind, accountability, principles of values, empowerment and ownership, consent and confidentiality. अगर एक्सक्यूज मी, मुझसे कोई इंसान कोई बात शेयर कर रहा है, हमारी तालीमी इदारों में ये बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स आते हैं और बच्चों से अपने प्रॉब्लम्स, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हम टीचर्स क्या करते हैं, स्टाफ रूम में बैठकर उस बच्चे के बारे में बात करें। I'm sorry, but this is not confidentiality. It is absolutely not confidentiality. We are making the child a talk of the town for nothing. If a parent has come and has shared a problem, now this is our moral responsibility to maintain confidentiality at all times. ये एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करी थी, बट इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हम अपने इर्द गिर्द, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बेशुमार दफ़ा देखते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हम उसके पर कुछ कर नहीं पाते। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रही थी कि अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर आप इन चीज़ों को ज़रूर इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए। अब देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके द एंटायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बिकम एन एथिकल इंस्टीट्यूशन। मूविंग फ्रॉम हियर, कुछ कोडिफाइड वैल्यूज होते हैं। अब हम अपने इदारों में, जैसे मैं आपसे अभी कह रही थी कि हम इदारों में इम्प्लीमेंट करें, तो कुछ चीज़ें होती हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा इदारा या जिस जगह हम काम करें, या हम खुद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम खुद, आर वी रियली ethical people? Do we really have morality? Do we really have integrity? Do we really have them? And are we really practicing all of those within our professional boundaries? If yes, good. That's a self check. If not, then we need to find, we need to locate, we need to search for the codified values. वो वैल्यूज जो हमें एक पैटर्न के तौर पे दी गई हैं कॉमन स्टैंडर्ड्स में, वो हमें अपने अंदर ढूंढनी है। जब अपने अंदर ढूंढेंगे, then we will be able to find them in the peers with whom we work. Then we will be able to find with the students whom we work. And then this is how a process slowly and gradually starts. So identification of that, reflecting upon that, trying to find that out is actually a very difficult task. And for that purpose, what is suggested that you take help from your peers. एक कंसोर्शियम बना के एक ग्रुप सेटिंग के अंदर बैठ के इस बारे में बात करना, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना इज एक्चुअली वन वे ऑफ लोकेटिंग वेदर यू आर एथिकल, you are moral, you have integrity, and you are bringing into practice. बहुत सारे स्कूल्स में बाकायदा वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग का कोर्स के तौर पर उसको पढ़ाया जाता है। कुछ स्कूल्स उसको नहीं पढ़ाते, they exemplify, they role model, they model it, which is absolutely fine, absolutely fine. But in certain schools and certain institutions, we do not find that. There's absolutely no harm in if the teachers who really understand ethics and morality shares it with the management. Ask them to integrate this, because this is the need of the time. The degeneration that has happened in the society is mainly because we have drifted away from our core value system. And the main place from where these values can actually be not only practiced but instilled
in our generations is the school. And that is why I lay so much stress on the school, its functioning, its thinking, and its overall performance and approach towards education. Now, foundation of professional values, when we talk about it, there's certain things that are actually by BSTEAK. These are very, very commonly defined professional values जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. इसमें से कुछ यही है कि acceptance of unique qualities, service, confidentiality, accountability, respect, अपने अंदर के इंसान को समझना और उसको समझकर अच्छे उसूलों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना इज़ बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज़. ये बहुत आसानी से दिस लिटरेचर इज़ वेरी वेरी इजीली अवेलेबल. यू कैन जस्ट सर्च द नेट एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ मटेरियल ऑन एथिकल वैल्यूज़ एंड कोर वैल्यूज़. कुछ चीज़ें विच आई फाउंड आर इम्पेरेटिव. आई हैव ब्रॉट इट ऑल हियर फॉर योर रेफरेंस. ये कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं. ये एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है जिसके अंदर कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि वो कौन कौन सी फंडामेंटल वैल्यूज़ है जब हम ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं. सो अपहोल्डिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलबींग इज एक्चुअली अ वैल्यू दैट वी ऑल नीड टू वर्क एंड प्रैक्टिस. रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, promoting the right of participation, treating each person as a whole, identifying and developing strengths. ये वो है जो human rights से related है. When we move to the professional integrity, कि जो professionals हैं उनकी integrity के basic core values और principles क्या हैं? Upholding the values and reputation of the profession. The very first thing is respecting the profession we are into. Very very important. ज़्यादातर हम लोग अपने professions को जिसमें हम होते हैं बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं और ये हमारी अपनी कमियों को जाहिर कर रहा होता है. So just look into it, admire, embrace the profession you are in. And this is one of the core fundamental values that we have. जब आप उसको appreciate करना शुरू करेंगे, automatically you will feel a positive change in you and then you will start to develop your professional integrity. Then being trustworthiness. This is something very, very important which every single professional needs to have, trustworthiness. Maintaining professional boundaries. Making considered professional judgments and being professionally accountable. ये 5 फंडामेंटल प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की वैल्यू ओरिएंटेड कोड्स हैं. अगर ये हम समझ लें, इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, नॉट ओनली वी विल बिकम बेटर इंडिविजुअल्स बट द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग विल डेफिनेटली बी अ बेटर प्लेस टू वर्क. देन सोशल जस्टिस. आजकल ये बहुत एक कॉमन ट्रेंड चला हुआ है कि पीपल आर रियली टॉकिंग अ लॉट अबाउट सोशल जस्टिस एंड द इश्यूज विद देम. सो उसके लिए सोशल जस्टिस के लिए व्हाट आर दोस 5 fundamental core values that we need to understand and practice are challenging discrimination, recognizing diversity, distributing resources जहाँ पे हम equity और equality की बात कर रहे होते हैं, challenging unjust policies and practices and working in solidarity. Again, something few of the words which are very commonly used, but the real meaning of this, the essence of it, and above everything, the practice of this seems डिफिकल्ट. तो ये अब इनएविटेबल हो गया है कि हम इन चीज़ों को समझकर और आगे इसके ऊपर काम करना शुरू करें. राइट. सो एक एंटी ऑप्रेसिव मूवमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग सा मुझे ये एक पार्ट मिला. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू दैट यू नीड टू रिमूव द नेगेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस इफ यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ ऑप्रेशन. और वो ऑपरेशन हम ये बात समझते नहीं है कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो हम कर रहे होते हैं वो अपने आप के साथ करते हैं, अपनी ज़ात के साथ करते हैं. राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट, अब हम बात कर रहे थे बहुत देर से कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे. देखिए बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को अप्लाई करने के, बहुत सारे. उनमें से एक तरीका जो हम कर रहे होते हैं वो है एड्रेसिंग एथिकल डायलेमास एंड मेकिंग डिसीजंस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट. मैं आप लोगों को इतनी मिसालें दे सकती हूँ, इतनी मिसालें कि जहाँ पे हमने एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं और वी डोंट इवन रियलाइज, we just don't even realize in our own professional settings that we are actually being unethical. We share information, we leak our information, we talk about people, we laugh at people, we blame students, we label students, we badmouth about our own profession, we do bad mouthing about our organization. These are all different
types of unethical practices that we do in real life, and that needs to be curtailed. That needs to be curtailed. Unless you are not respectful to your profession, to your people, and to your own self, you will not succeed. जब हम इस तरह की unethical practices में होते हैं, basically we are disrespecting our own selves, and that is what I always say. This is a disrespect, because सबसे पहले आप अपनी खुद डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इससे पहले कि कोई दूसरा करे. So these are very important issues and we need to be mindful about them. बहुत कम मैंने ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं अपनी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी में where people really think of what they are saying, of what they are doing, how they are raising their voice, and what basically their practices are. The moment they start realizing that they become more cautious of the use of the words, because now they understand that they are crossing the professional ethical boundaries which are set for them. Right? So as I just told you, applied ethics basically is our practices of ethics, morality, and integrity in our social, in our educational institutions. This is a very interesting picture which I thought I should share with you. Whenever we are in the real life situation, specifically in a school context, बहुत सारी जगहों पे हम confusions का शिकार हो जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्या हमें ये बात करनी चाहिए या हमें ये बात नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम हो रहा है, मैं अब आपको इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. एग्जाम हो रहा है और एक बच्चा who is basically a bright student who has had a very good record of studies has been found cheating during the exams. Now the teacher caught the child, took him or her into her custody, and then started interrogating, inquiring, investigating. Why did this happen? And the child, that particular student, started sharing the real problems that he or she had faced recently, family problem, domestic problem, and XYZ. And at that time, the cheating of that child actually becomes justified. Now, this is just a hypothetical situation I'm sharing. आपको उस वक्त उस बच्चे की वो एक्ट गलत नहीं लगती, क्योंकि जब आप उस रीजन को समझते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो बात ठीक है, अब क्या किया जाए. इस टाइम पर एज प्रोफेशनल्स हमारे लिए एक एथिकल डायलेमा क्रिएट होता है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ द कंफ्यूजन दैट वी गो थ्रू. कि आया मैं इस बच्चे को पनिश करूं, पनिश का मतलब ये है कि उसके मार्क्स काटूं या उसको एग्जाम से हटा दूं, या मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूं, या मैं इस बच्चे को सपोर्ट करूं. It is very difficult, and there are thousand other examples that are there throughout a professional practice. So ethical dilemmas are a very common part, but deciding upon that ethical dilemma and taking a moral, ethical, and above everything, the right decision is difficult. But that only comes if you are professionally aware of yourself and personally aware of yourself. Right, everybody? So this is how the ethical dilemmas are resolved. We always try to make it simple. First of all, the problem that comes to us within our professional practices, the very first thing is that we start to entangle. एक गिरा खोलना शुरू करें, रीजंस को आइडेंटिफाई करें. रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक इशू को देखें, उसको समझें, और फिर आप अपना डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन सही मानों में अच्छी तरीके से एथिकली होगा. अदरवाइज अगर आप नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल नॉट बी द सेम एज यू वर थिंकिंग. यू कुड एक्चुअली फॉल इनटू bigotry, you can fall into मेरे ध्यान में बहुत अच्छा लफ्ज आ रहा था, into a wrong decision which might not be ethical. So we need to be very, very careful. It's a process that we need to actually go through, and we can only put ourselves into this process if we are ethically and morally aware. Last but not the least, this is the last part that I wanted to share with you all, कि जब भी हमें ethical dilemmas होते हैं या moral dilemmas होते हैं अपने education institutions के अंदर या इन हमारे work places के अंदर. So this is a 5-stage model of decision making that is given by Ajaz in 1985. A very well practiced model. अगर आप इनके through देखें तो हमें बहुत आसानी हो जाती है अपने ethical decisions को लेने whenever we are stuck in an ethical dilemma. So the very first thing is identifying the problem. कि जो हुआ है एक स्टूडेंट के साथ, किसी के भी साथ भी, वो क्यों हुआ है, कितने ऑप्शंस हैं उसमें, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. फिर
सबसे ज्यादा एथिकल क्या है? क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा एथिकल ये है कि अगर एक बच्चे ने एक टीचर के साथ बदतमीजी की है तो मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूं या मैं उसको खुद काउंसिल करूं? ये एक एथिकल डायलेमा है। मुझे पता है वो बच्चा ऐसा नहीं करता, बट बिकॉज उस बच्चे ने इस तरह किया है, आई नीड टू, so I need to put all the options in my mind before I come up to the most ethical decision. Then I have to, once I've taken that decision, now I have to implement. And once I'm implementing, I need to be cognizant, aware of the consequences of my decision, and I need to be ready with all. Right? So, if we really understand the principles that I've just shared with you all, the values with you all, actually helps us in becoming people, professionals who practice integrity, ethics, and morality. Right. So, thank you very much. With this, I come to an end of my topic. I only have one comment. No problem, everyone. Please feel free to write to me later. If you have any queries, if you have any request sessions, please, I will really appreciate if you can share them with me. I'll prepare my sessions accordingly. I know you all are very busy, but still, this is a platform to learn. I'm just trying to help teachers, I'm trying to help professionals grow. And this is a support mechanism that I've developed. And because schools are starting from opening from tomorrow, lakh shukar hai for that. All my wishes for everyone. Please stay safe. Please stay happy. Please continue to educate ourselves in whichever way we can. So, Allah Hafiz, everybody. I'll meet you next week with another topic of request.